Hello friends, a very good evening to all of you. In today's class, we are going to discuss your modern education in India. So, आजर क्लास रे आपनकर डिस्कशन हमें करिबा मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. तो या पर ऑलरेडी आपनकर ओपीएससी रे क्वेश्चंस आसरिछि एंड आउ किछि डिटेल आपनकर हमें डिस्कशन आपन करिबा सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. So before that, if you can hear me, am I audible? So please give a response so that we can begin our class. Fine. So let's continue our discussion, that is the growth of your modern education in India. So whenever we are talking about your growth of your modern education in India, if you can hear me, am I audible? Hello everyone, those who are watching, you can give a reply so that we can continue our discussion. So in today's class, we will see your growth of your modern education in India. यहाँ पर already OPSC रे अपन question आसरिछि. तो whenever we are talking about your education system in India, आपनकर या ए रिलेटेड टॉपिक ऊपर दिटा क्वेश्चंस आपन को उभरी कि वर्तमान आपन का आसीबो इंपोर्टेंट, दैट इज योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट. सो एजुकेशन पॉलिसी ऊपर भाई क्वेश्चंस आपन पचारि पारे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जोटा कि हमें ऑलरेडी अपन डिस्कशन करि सर फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो वर्तमान आपन डिस्कशन करिबा जो दैट इज योर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, और यू मे गेट ए क्वेश्चंस दैट इज योर एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग योर ब्रिटिश रूल. फाइन. So whenever you are talking about your education system, यार तीनटा पहलू रे एक्चुअली अपन देखा जाए. ओके, सो द रिफॉर्मेशन दैट एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो दैट इज एक्चुअली वन एस्पेक्ट दैट वी हैव टू सी. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपन जो एजुकेशन सब रिफॉर्मेशन अपन आने ताकू अपन डिस्कशन करिया पड़िबो. देन द एजुकेशन रिफॉर्मेशन दैट एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज दैट वी हैव टू फोकस, एंड द एजुकेशन सिस्टम दैट एक्चुअली पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटेंड इंडियंस जदि अपन मॉडर्न एजुकेशन अपन कुआ जाए. सो मॉडर्न एजुकेशन रे सब मेनली होची अपन मॉडर्न हिस्ट्री जो थ्रू स्टार्ट होची, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट रो कोन कंट्रीब्यूशन अपन रहिछि. सो क्रिश्चियन मिशनरीज माने कोन आपनकर केमिति एजुकेशन को प्रोपागेट अपन करंती, एंड आपनकर जो आपनकर ये हमर इंटेलेक्चुअल इंडियंस, राइट. सो दैट इज योर एनलाइटेंड इंडियंस हम अपन कहू. सो सेमानकर कंट्रीब्यूशन अपन कोन थिला. सो दैट एक्चुअली वी नीड टू कवर इन मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. क्लियर. तो समस्त अपन देखंतु, जदि अपन देखिबा इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जदि आमे डिस्कशन अपन करिबा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कथा जदि आमे अपन देखिबा, देन मॉडर्न एजुकेशन बिगन इन इंडिया अंडर योर ब्रिटिश रूल. बिफोर द ब्रिटिश, इंडिया हैड इट्स ओन एजुकेशन सिस्टम्स, राइट. आपन जानिचंती आज योर गुरुकुल आपन रहितला एवं आपन मद्रासा आपन रहितला, राइट. सो द ईस्ट इंडियन कंपनी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 60 years ऑफ ए रूल डिडंट केयर मच फॉर द एजुकेशन ऑफ दोज दे रूल्ड इन इंडिया, कारण से माने आपन एजुकेशन को विशेष फोकस अपन देई नथिले. बट परवर्ती अवस्था इवन इन इंग्लैंड यूनिवर्सल एजुकेशन केम अबाउट एट a much later stage that you can mention. So whenever we are talking about the education system in India, so whenever you are focusing on your traditional system कथा जतरा अपन कहउचंदी, ओके, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कथा जतरा कहउचंदी, या हेलो अनमोल, हेलो रोजालिन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. So whenever you are talking about the educational system in India, जतरा मैं अपन कहउचे, एंड जतरा अपन बिफोर योर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस माने अपन देखंत टॉपिक होचे अपन कोन ना अपन मॉडर्न एजुकेशन कथा अपन कहउचे. बट एट जदि मु टिके अपन थोड़ा आईडिया अपन देबी, सो इफ यू विल रेफर टू योर अर्ली टाइम, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. तो आपण मैंने समस्त जानी इंट्रोडक्शन तो आपको टिके बैकग्राउंड स्टार्ट करिया पड़िबो ना भाई. इंट्रोडक्शन सब अपन बैकग्राउंड स्टार्ट हुए. फाइन. सो बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अर्ली टाइम रे एक्चुअली अपन कोन थिला, वी यूज टू फॉलो योर ट्रेडिशनल सिस्टम, जहाँ हमें अपन पढ़िले एठी, जहाँ अपन एठी अपन देखिले जे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बिगन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल. बिफोर द ब्रिटिश, इंडिया हैड इट्स ओन एजुकेशन सिस्टम, जेमति कि गुरुकुल कहउचे अपन मद्रासा अपन कहउचे, राइट. तो सिमिलरली जदि मु अपन लिखिबे एठी एंशिएंट टाइम रे ट्रेडिशनल सिस्टम जो हम रहितला, तो सेथिरे अपन कोन रहउतला ना अपन हिंदूज माने एवं अपन मुस्लिम्स माने सेमानकर ट्रेडिशनल सिस्टम किछ रहउतला, जहाँ द्वारा से माने अपन एजुकेशन को एक्वायर अपन करथले. या हेलो सुजाता, हेलो अनमोल, रोजालिन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो हिंदूज मानक पई कोन थिला ना अपन गुरुकुल अपन रहितला, राइट. हिंदूज मानक पई कोन रहितला ना अपन गुरुकुल रहितला, तांको पई अपन पाठशाला अपन रहितला, राइट. सो पाठशाला अपन रहितला जोटी कि सेमने अपन जाई कि गुरुंका पाखरे अपन अध्ययन अपन करंती, राइट. सिमिलरली अपन कोन रहिछि ना अपन मद्रासा अपन रहिछि. तो मद्रासा मुस्लिम मानक पई इफ विल टॉक अबाउट योर मुस्लिम्स, सॉरी, सो इफ विल टॉक अबाउट योर मुस्लिम्स, सेमानक पई अपन मद्रासा अपन रहिछि, एंड सेमानक पई अपन मक्तब अपन रहितला, राइट. तो जोटी अपन कोन हेबो ना ऑलरेडी में भी पढ़ी छे अपन मद्रासा वगैरह मक्तब वगैरह हमें सब पढ़ी छे. सो मद्रासा एंड जो मक्तब अपन रहितला, यूजुअली मक्तब रे एक्चुअली कोन हुए ना प्राइमरी एजुकेशन इंपार्ट करा जाय, बुझि पाले. प्राइमरी एजुकेशन इंपार्ट करा जाए मक्तब्स रे, एंड मद्रासास रे अपन हायर एजुकेशन इंपार्ट अपन करा जाए. इज दिस थिंग क्रिस्टल क्लियर, बुझी परछन समस्ते. सो हिंदूज कर रहितला अपन गुरुकुल सिस्टम एवं पाठशाला सिस्टम, मुस्लिम मानक पय रहितला अपन मद्रासा सिस्टम एवं मक्तब सिस्टम जो रहितला मेनली अपन
प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्ट अपन कराउथला एंड मद्रासा सर हायर एजुकेशन इम्पार्ट अपन कराउथला एंड आपण माने जानिछन ओडिसा रो जो मद्रासा अपन रहिछि सेथिरे केमिति अपन डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट अपन करा जिवो सो दैट इज वन ऑफ द एम ऑफ योर नवीन पटनायक राइट नेक्स्ट अपन देखंतु व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन सिस्टम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन सिस्टम सो मॉडर्न एजुकेशन रे अपन तीनटा रोल तीनटा कंट्रीब्यूशंस अपन मेंशन अपन करबा दरकार दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी म अपन कहउथले एबे सो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर मेन अपन कंट्रीब्यूशंस अपन कोन रहिला मॉडर्न व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट योर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम so you can write the contribution of your britishers okay the contributions of your british government tankara contributions अपन कोन रहितला the contributions of the christian missionaries मानकर contributions अपन कोन रहिला then होच अपन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स बा अपन इंडियन रिफॉर्मर्स से माने अपन एजुकेशन पॉलिसी पई कोन अपन कंट्रीब्यूट अपन करले सो ये तीनटा डायमेंशंस रे हमकु लेखिबा को पड़े whenever we are writing any questions on your modern education in india जोटा कि अपन एग्जाम रे क्वेश्चंस अपन पचारि सारिछि या हेलो भूमन्यु सो a very good evening to all of you those who are watching जो माने समस्त देखुछन हालो सुजाता समस्त एक टोटा अपन वीडियो को लाइक कर दियंतु तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया तो आमे आपनकर एंशिएंट टाइम रो आमे एमती आपन स्टार्ट अपन करि परिबा एवं आमे आपन देखि परिबा दैट दिस ग्रेजुअली द एजुकेशन सिस्टम हैज बीन रिफॉर्म्ड बाय योर ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय योर क्रिश्चियन मिशनरीज बाय योर एनलाइटेंड इंडियंस दैट वी कैन से So whenever we are talking about your modern education development, so the company actually wanted some educated Indians who could assist them in the administration of the land. तो सिचुएशन अपन कोन रहितला ना अपन जो जो अपन ऑक्युपेशन हायरार्की जो रहितला सो ऑलवेज दिस टॉप पोजीशन वाज एक्चुअली एक्वायर्ड बाय योर ब्रिटिशर्स टॉप पोजीशन वाज एक्चुअली एक्वायर्ड बाय योर ब्रिटिशर्स मिडिल सेक्शन वाज आल्सो एक्वायर्ड बाय ब्रिटिशर्स मिडिल सेक्शन को मध्य अपन ब्रिटिश माने एक्वायर अपन करूथले बट सेमान को किछि अपन लोक दरकार थिले जो माने तंको अपन हेल्प अपन करिथाने जो माने को अपन लोअर ऑफिसर्स बोली के लोअर ऑफिसर्स रे सेमान को रिक्रूट करिया को चाहुथले जो माने कि तंको अपन हेल्प अपन करिवे राइट सो धीरे धीरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जतले बडो हुए सेमान को किछि अपन हाथ अपन दरकार हुए सो सेति पई कि लोअर सेक्शन पई सेमान को अपन इंडियंस मान को सेमान चाहुथले आज इंडियंस वर वेरी लॉयल to your Britishers right so in जो Britishers मानक पई so educated Indians जो सब रहितले so they are actually loyal towards the British rulers सेति पई कि सेमान को ई लोअर सेक्शन रे रिक्रूटमेंट करिया पई सेमान इंडियंस मानक किछि एजुकेट करिया को सेमान एक्चुअली अपन किछि भाबंती बुझि परछंती एंड जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स गुडी को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जतले अपन पई बढ़े राइट सो इन द एरा व्हेन योर इंडस्ट्रियलाइजेशन विल राइज सो ए ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को पई गोटे अपन कंज्यूमर बेस गोटे अपन मार्केट तयारी करिया पई इंडियंस मानक एजुकेट करिवाटा निहाती दरकार सेमान अपन बुझिथिबे जोथि पई कि इंडियंस मानक एजुकेशन इम्पार्ट अपन करिया पई सेमान अपन ट्राई करिवे इज दिस थिंग क्रिस्टल क्लियर बुझि पले समस्ते तो सेमाने चाहुथिबे जे अपन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रे हमरो सेमाने अपन हाथ बंटांतु हमकु सेमाने टिके सहाय्य अपन करंतु so that is also the primary aim of your Britishers for which they will emphasize or they will impart your modern education in India पूरा क्रॉक्स भाई अपन अगर थोई देले these are the important points so the company wanted some educated Indians अपन लिखि परबे who could assist them in the administration of the land also they wanted to understand the local customs as well so for this purpose Warren Hastings established your Calcutta Madrasa so in 1781 for the teaching of your Muslim law so especially अपन जानछन मद्रासा सर जेम हम अपन कहली हिंदू रे जेम हमरा गुरुकुल पाठशाला अपन थाए मुस्लिम से जेम अपन मक्तब एंड योर मद्रासा अपन थाए जो तरीके के अपन मुस्लिम लॉ स्पेशली तंकर जो रिलीजन को मेनली अपन स्टडी करा जाय so in 1791 a Sanskrit college was started in Varanasi by your Jonathan Duncan for the study of a Hindu philosophy and laws so धीरे धीरे रिलीजन स्पेसिफिक स्टडी अपन करबा को अपन से माने प्रमोट अपन करंती तो एठी अपन मद्रासा कलकत्ता मद्रासा कथा अपन मेंशन करि परबे बाय योर वारेन हेस्टिंग्स एवं अपन जॉनथन दोकान ये होचे अपन भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर प्रीलिम्स पई होचे अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुडी The missionaries supported the spread of your Western education in India. The missionaries supported the spread of your Western education in India primarily for your proselytizing your activities. So they established many schools with education only being a means to one end, which was Christianizing and civilizing the natives. तो मु अगेन अपन क्रिश्चियन मिशनरी कथा अपन भाई कहबी तो मॉडर्न एजुकेशन अपन मेनली इट ब्रिंग्स योर रैशनैलिटी राइट मॉडर्न एजुकेशन कोन करे ना इट ब्रिंग्स योर रैशनल थिंकिंग and your scientific temperament right so this was actually this was led to the adoption of your Christianity so Christianity अपन adopt करिवार मेन अपन कोन मोटिव अपन कोन ना how to develop your rational thinking and scientific temperament how to be a civilized citizen so that is actually the main idea behind your Christianity जो थे कि Christianity will be Christian missionaries will use it as your weapon of your modern education for the conversion and हमें अपन पढ़ी चर्चे कन्वेंट स्कूल कथा अपन पढ़ी चर्चे जा को अपन सैतानी दफ्तर अपन कहती तो रिलीजियस कन्वर्सन ये अगेन अपन हेल्पफुल अपन हबो so the Baptist missionary William Carey had come to your India in your 1793 and by your 1800 there was your Baptist mission in your Serampur Bengal and also a number of primary schools there in by nearby areas so the Indian reformers believed
that to keep up with your times, a modern educational system was needed to be spread rational thinking and scientific principles or scientific temperament. बुझी पाले तो मैं आपन कहउतली पॉइंट्स आपन कहउतली तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ योर क्रिश्चियन मिशनरीज का देखंतु मैं आपन ऑलरेडी शेयर करली एठी आपन ब्रिटिशर्स कर कोड आइडिया थिला सो बैकग्राउंड ऑफ योर ब्रिटिश गवर्नमेंट मैं आपन बुझेली सो से माने आपन चाहुतले आपन दे वांटेड योर हेल्प इन योर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस as the educated Indians were loyal towards the British government, so they want to help in their day to day affairs, right? semane apanଙ୍କର जो day to day affairs रे जेतु educated Indians माने आपन loyal आपन कबे British rule ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ସେମାନେ they were actually trying to utilize your Indians as a consumer base for the British products, right? जदि आपण माने भाई शिखिबे ताले तपन भाई कोट बिक्री हबो जदि आपण माने भाई पाठ पढा शिखिबे ताले तपन भाई जूता बिक्री हबो, राइट कि नहीं? ताले तपन भाई जो आपण टाई आपण पिंदिबे ताले तपन भाई टोपी आपण पिंदिबे वगैरह वगैरह भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन को भाई प्रमोट अपन करिया पई एजुकेशन को एज एन इंपोर्टेंट टूल भाबरे मते यूज कराउथला दैट वी हैव सीन जोथि पई के परवर्ती अवस्था रे रिलीजियस टीचिंग्स रो अपन स्टार्ट हुए तो रिलीजियस टीचिंग रा अपन देखिले मद्रासा रा सेटअप एवं अपन संस्कृत कॉलेज रा सेटअप अपन तक मेंशन अपन करि परिबे दिस मिशनरी सपोर्टेड द स्प्रेड ऑफ योर परवर्ती अवस्था वेस्टर्न एजुकेशन को अपन सपोर्ट अपन करा जाय दैट वी हैव ऑलरेडी सीन सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ योर क्रिश्चियन मिशनरीज सो क्रिश्चियन मिशनरीज मॉडर्न एजुकेशन अपन कोन करिवो ना अपन रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप अपन करिवो which will lead to the adoption of Christianity that we have understood and rather later on it was actually utilized as an weapon of your modern education for the conversion of a religion जत अपन भाई बुझी जिबे जत मु अपन पाठ पढे के ब्रेन वॉश अपन करिवि, राइट? सो अपन मन को भाई मु अपन सो YouTube रो भाई आमे अपन अनएकेडमी को अपन जॉइन अपन करि परिबो, राइट? तो सिमिलर टाइप ऑफ योर कन्वर्सन अपन होतला जदि तुमको भाई एति बेनिफिट तुमको मिलुची ताले तमे जदि क्रिश्चियनिटी कंप्लीटली तमे भाई कन्वर्ट अपन हेइ जिवो ताले भाई तुमको कोन न मिलिवो, बुझी परछन ना भाई? सो एक्जाक्टली सेही टाइप रो कन्वर्सन अपन हुए, फाइन? सो मु एठी अपन कहि देबा चाहूची जो माने अपन कन्वर्ट होबा चाहउछन अपन क्रिश्चियनिटी, राइट? जो माने अपन अनएकेडमी को आसी चाहउछन यू कैन कम एंड यू कैन जॉइन Unacademy. So prelims मेंस एंड ऑप्शनल रो भाई अपन पूरा प्रिपरेशन अपन करि परिबे सो प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल कंप्लीट प्रिपरेशन अपन करि परिबे विथ अ कॉस्ट ऑफ योर ओनली 300 रुपीस, फाइन? प्रीलिम्स मेंस एंड योर ऑप्शनल खाली अपन वेस नुहे ता सहित अपन एसओ ओएमसी सबुर एक्सेस अपन पाई जिबे सो यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज पुरुषोत्तम लाइव PURUSOTTM पुरुषोत्तम लाइव यू कैन अप्लाई माय रेफरल कोड एंड यू कैन कन्वर्ट योर अनएकेडमी स्टूडेंट एंड अपन भाई पाठ पढ़ा अपन स्टार्ट अपन करि परिबे डेफिनेटली अपन बहुत हेल्पफुल अपन हबो सो ओडिसा सब तक टॉप एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर्स थ्रू अपन माने क्लास करि परिबे कोनोसी किछि रेस्ट्रिक्शंस अपन रहिबो नाही, फाइन? कोनोसी किछि रेस्ट्रिक्शंस अपन रहिबो नाही, ओके? एनीवेज आमे आसन अपन टॉपिक को अपन पढाइबा सो ये थिला अपन कन्वर्सन रा कथा, फाइन? सो भाई मन रखिबे देन होची कोठी अपन थिले, ओके फाइन? एठी अपन थिले, राइट? सो देन होची अपन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट? सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अपन कोन कला ना it took the first step towards the education being made an objective of the government. तो चार्टर एक्ट 1813 कथा निहाती भाबरे अपन मेंशन करिवे whenever you are writing about your modern education विषय जत अपन लिखुचंदी तो चार्टर एक्ट 1813 कथा मेंशन अपन करिवे बिकॉज़ इट वाज द फर्स्ट स्टेप यू कैन से जो थरे के कोन करा गला ना क्रिश्चियन मिशनरीज माने को फॉर्मली अलाउ करा गला जे सेमाने अपन रिलीजियस कन्वर्सन बा सेमाने अपन रिलीजियस कन्वर्सन ऑफ योर मासेस विल बी अलाउड एंड जो थरे के सेमाने एजुकेशन मते अपन सेमाने दे परिवे सो द एक्ट सैंक्शन ए सम ऑफ रुपीस 1 लाख टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ योर इंडियंस सो फर्स्ट टाइम पे लाख टका अपन सैंक्शन अपन कराइतला इंडियंस मानक एजुकेशन पई सो ब्रिटिश रूल इन योर इंडिया. This act also gave impetus to missionaries who were given official permission to come to India. So right now, they can come, they can preach, and they can propagate their religion. But there was a split in the government over what kind of education what has to be offered to your Indians. So the Orientalists preferred Indians to be given your traditional Indian education, right? So Orientalist माने तापरे माने एक्चुअली किसी नेचर अपन डिसाइड अपन करा जे नथला माने Orientalist अपन रहिबो ना अपन इंग्लिश एजुकेशन अपन रहिबो सो दैट वाज एक्चुअली नॉट डिस्कस्ड सो Orientalist माने एक्चुअली प्रिफर करथले केमते ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जोटा कि तांकर गुरुकुल पाठशाला रे पढाउतला जहा कि अपन मक्ताब्स and your madrasas से जहा अपन पढाउतला सो दैट शुड बी फोकस्ड सो एठी अपन कन्वेना कंट्रोवर्सी अपन हुए सम अदर्स हाउएवर वांटेड योर इंडियन शुड बी एजुकेटेड इन योर वेस्टर्न स्टाइल and of your education and to be taught your western subjects कारण more and more number of opportunities अपन आसीबो एडमिनिस्ट्रेशन से तांको भलो पोस्ट अपन मिलिबो so there was also another difficulty regarding the language of your instruction some wanted the use of your Indian language जो vernacular language को किछि अपन चाहुतले and किछि अपन English language को अपन प्रिफर अपन करूतले so due to these issues the sum of money allotted was not given until year 1823 when the general committee of your public instruction decided to impart your oriental education so सेत पे अपन मनी जो सैंक्शन अपन हितला से अपन होल्ड से मन अपन रखि जंती in 1835 it was decided that the western science and the literature would be imparted to Indians through the medium of your English
by Lord William Bentinck's government. So परवर्ती अवस्था विलियम बेंटिक अपन आसंती. So इटा डिस्कशन अपन करा. So it was actually decided that western science and literature अपन को promote अपन करा जिवो and English language अपन को रहिबो अपन medium of instruction अपन English language रहिबो. So Bentinck appointed your Thomas Babington Macaulay. एठी again अपन भाई Macaulay को कथा अपन मेंशन करे को भूलिबे नहीं. Whenever you are talking about your modern education ताको अपन देखिबो Macaulay's committee as the chairman of your general committee of your public instruction. So Macaulay was an ardent Anglicist who had absolute contempt for your Indian learning of any kind. So he was supported by your Reverend Alexander Duff and your J.R. Colvin. से माने सब आपनकर सपोर्ट करंती एवं से आपनकर इंग्लिश को प्रोपागेट करिया पे से मेंशन आपन करंती. On the side of the Orientalist were your James Prinsep, Henry Thomas and Colebrook जो माने कि चाहूथिबे जे इंडियन रो कल्चर एवं आपनकर तार ट्रेडिशंस को मेंटेन करिया पे वर्नाकुलर लैंग्वेज टू बी फोकस्ड. सो दे वेर योर ओरिएंटलिस्ट. से माने आपनकर ओरिएंटलिस्ट बा आपनकर वर्नाकुलर लैंग्वेज को फोकस अपन करथबे. देन आपनकर भाई मेंशन अपन करिया Macaulay's minute जो आपनकर आसिला. So it refer to the proposal of the education for your Indians. So according to him Macaulay minute proposals अपन किछि मेंशन कर परिबे जेमति कि English tradition should be imparted in place of the traditional Indian learning because the Oriental culture was defective and your unholy ବୋଲି ताको अपन से मेंशन करिवे. फाइन. So Oriental culture जो अपन रहिछि as this is full of your traditions, traditional knowledge, superstitions and your beliefs, okay, so they are defective and you're unholy. For that is an English education should be imparted. He believed in education of a few upper and your middle class students. Semane apangra mane they were not allowed to penetrate your education throughout your India or your throughout the section throughout your society. में अपन कहि परिबा lower section of society को सेमन को deprive अपन करथिले. In the course of time English education was trickled down to the masses. This was called as infiltration theory. एबे ही मु आपनकर किछि दिन पूर्व आपन डाउन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी आपन कहउतले डाउन प्रोडक्ट थ्योरी आपन भाई बुझौते इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी परवर्ती अवस्था रे भाई आपन एजुकेशन आपन पेनिट्रेट आपन वे सोसाइटी रे. सो डाउनवर्ड्स आपन एजुकेशन मूवमेंट आपन वे राइट. सो टॉप टू डाउन अप्रोच रे एजुकेशन आपन समस्त पाख आपन पहुंचे. सो दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी. ही विश टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस हु वेर इंडिया इन कलर एंड ब्लड. सो भाई एटा देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन. ही विश टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस हु वेर इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड योर एफिलिएशन. बुझी पारछन्ती. सो सेमाने आपन इंडियंस आपन हेबे कलर एवं ब्लड रे बट इंग्लिश आपन रहिबो तांकर इंग्लिश आपन रहिबो इन योर टेस्ट एंड योर एफिलिएशंस रे. सो दैट वाज द मेन आइडिया. ओके. इन 1835 सेइथिपे ही सेमाने अपन इंग्लिश को इंपार्ट अपन करिया को ट्राई करथबे ना. बिकॉज़ मॉडर्न एजुकेशन रे सेमाने एक्चुअली दे वेर सेमाने बिलीव अपन करथबे दैट एजुकेटेड इंडियंस विल बी लॉयल टुवर्ड्स योर ब्रिटिश रूल राइट. So educated Indians will be loyal towards your British rulers and they will act as a shield. सेमान ही अपन प्रोटेक्ट अपन करिवे whenever जेतबळे एजुकेशन अपन एजुकेशन रे अपन रिवोल्यूशन अपन हबो जेतबळे अपन कोन हबो ना कॉमन पीपल माने मास माने जेतबळे अपन स्ट्राइक वगैरह अपन करिवे एई एजुकेटेड ए जो गोरा साहेब माने रहिथिबे ए जो अपन इंडियंस रे रहिथिबे सेमान अपन ब्लड एवं कलर रे बट तांकर टेस्ट एवं एफिलिएशन रे सेमान अपन इंग्लिश अपन रहिथिबे. these are going to control your public masses right. so सेमान ही सेमान को अपन प्रोटेक्ट करिवे. सो सेमान कोटे शील्ड भाबरे यूज करूथिबे सेमान को गोटे अपन मोहरा भाबरे अपन यूज अपन करूथिबे. एंड ब्रिटिशर सेहि पेंगी तांकर जो टॉप एवं मिडिल क्लास अपन रहिला टॉप एवं अपन मिडिल लेयर्स अपन रहिला पोस्ट रहिला सेगुडी को सेमाने इंग्लिश माने यूरोपियंस मानन को पाखरे ही सेमाने अपन रेस्ट्रिक्ट अपन करथिबे. केवल लोअर सेक्शन ही इंडियंस मानन को अपॉइंट अपन करा जिवो. इज दिस थिंग क्लियर? समस्त भाई बुझी पड़छन्ती. जो मन अपन देखुछन टिके पी लिखि दियंतु एंड जो मन अपन अछन्ती टिके वीडियो को लाइक कर दियंतु. सो इन 1835 द एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे एंड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वेर एस्टैब्लिश्ड. ओके. परवर्ती अवस्था रे सब मेंशन अपन करि परिबे 1835 रे एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे रे एवं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज मध्ये एस्टैब्लिश अपन होई. देन we can write something about your Wood's dispatch also. The Sir Charles Wood was the president of the board of control of your company in your 1854 when he sent a dispatch to the then Governor General of India, that is your Lord Dalhousie. So ताको अपन कोन कह जाय ना मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कह जाय. या ऊपर मध्ये ओपीसी रे क्वेश्चन अपन पचारे सारिछि. तो यार किछरा रिकमेंडेशंस अपन माने मन रखिथांतु किछि अपन पढिथांतु रिकमेंडेशंस अपन टिके जानि रखिथांतु. तो किछि भी जदि क्वेश्चन अपन भाई पाइबे देन अपन किछि मेंशन अपन करि परिबे रिकमेंडेशंस ऑफ योर वुड्स डिस्पैच. फाइन. आमी ऑलरेडी अपन स्पेशल क्लास रे या ऊपर अपन भाई पढिछे. तो वुड्स डिस्पैच कथा जत अपन कहउछन whenever you are talking about your woods dispatch, so certain recommendations are actually put forward by your so woods dispatch report रे किछि अपन recommendations अपन आस्तला जेमिति कि regularize education system from the primary to your university levels. तो सर चार्ल्स वुड किछि अपन recommend अपन करंती जेमिति कि एजुकेशन सिस्टम को अपन रेगुलराइज अपन करिया पे रहि गेला इटा होल टाइम पे मन रहि गेला. तो भाई मन रहि गेला तो कंप्लीटली right Anmol. So regularize to education system from your primary to your university levels. Indians were to be educated in your English and their native language. The education system was to be set up in your every province. Every district should have at least your one government school. Affiliated private schools could be granted aids. Education of your women should be emphasized.
University of your BMC, Bombay, Madras, Calcutta, were set to be set up by your 1857. University of your Punjab, 1882, University of your Allahabad 1887. This dispatch asked the government to take up the responsibility of the education of the people. तो ये थिला आपन वुड्स डिस्पैच रा सर्टेन रिकमेंडेशंस अपन भाई मन रखिथांदो किछि क्वेश्चंस अपन लिखि परिबे. सो टू रेगुलराइज योर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम योर प्राइमरी टू योर यूनिवर्सिटी लेवल्स, यस whole time paying, okay fine, western education sapang rahila, yes. So that is to regularize your education system from your primary to university level jai kemti education system ko regularize apang kara jibo. Indians mananko English language re medium of instruction apang rahibo English ebong tanga native language re vernacular language re tanku शिक्षा apang diya jibo. Education system was to be set up in every province re bhai pratyeka province apang education system set up apang kara jibo. Every district should have at least your one government school, minimum gote government school apang rahiba darkar. Affiliated private school could be your granted aid, semanko apang sahayata rashi apang bhai diya jibo. वोमेन मान एजुकेशन पे एम्फासिस करा बॉम्बे मद्रास कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपन सेटअप अपन हम देन पंजाब यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई अपन करागला एवं अपन कहगला द डिस्पैच आस्क द गवर्नमेंट टू टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल. माने टोटल अपन भाई आम जो अपन पढ़िले इनफिल्ट्रेशन थ्योरी अपन जो पढ़िले टोटल अपन एजुकेशन केमती सब स्तर अपन पहुंची पारिबो. सो दैट वाज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ योर वुड्स डिस्पैच दैट यू कैन मेंशन एक्चुअली. सो व्हिच वाज सजेस्टेड बाय चार्ल्स वुड. ओके, सो चार्ल्स वुड थिले अपन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपन जो रहितला इंग्लिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी राइट. सो सी आपको सजेस्ट अपन करते व्हिच इज ऑफन कंसीडर्ड एज योर मैग्ना कार्टा ऑफ योर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. बुझी पाले. सो इज दिस थिंग क्लियर समझ भाई बुझी पाले. तो टोटल सबुठ जब आप देखिए एजुकेशन रिफॉर्म गोटे ग्रेट एरा से कह जाए आफ्टर योर वुड्स डिस्पैच 1854 पर. सो दिस इज योर दिस इज ऑफन मोस्ट ऑफन कंसीडर्ड एज द ग्रेट एरा ऑफ योर एजुकेशनल रिफॉर्म फाइन. तो ये थ्रू ही आप एजुकेशन रिफॉर्म आप आसे. तो जदि आप कुल मिला के लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ विल कंक्लूड इफ विल असेस ऑफ योर ब्रिटिश एफर्ट्स इन योर एजुकेशन जदि आप देखा. So although there were a few English men who wanted to spread education for its own sake, the government was chiefly concerned only with its own concern. मु आपन कहली तांकर मेजर बेनिफिट आपन कोन थिला सेमान आपनकर सेमाने ट्राई एक्चुअली करूथिले जे सेमानु केमते आपन सेमाने केमते आपन लॉयल आपन रहबे प्लस सेमानकर निजर ओन माने ओन बेनिफिट आपन रहितला ता पछरे. सो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर योर क्लर्क्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स. से समय रे क्लर्क एवं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट गुडी का बहुत आपन रहितला जोटा कि कंपनी रो फंक्शनिंग पे स्मूथ फंक्शनिंग पे दरकार थिला. ठीक अछि. तो सेहि पे कि सेमाने आपन कोन करबे आपन रिक्रूट करिया को ट्राई करथिबे आपन इंडियंस मानको सेहि पे इंडियंस मानको आपन एजुकेशन इंपार्ट आपन करिवे. बुझि परछन्ती. देन होछि इट वाज अ चीपर टू गेट इंडियंस रादर देन योर इंग्लिश मैन फ्रॉम योर इंग्लैंड फॉर दिस जॉब. जदि सेमाने आपन इंग्लैंड तो आपन कहबे सर इंग्लैंड कोन पे आनलेनी. जदि इंग्लिश मैन को आपन आनिबे सेमानको आपन बहुत अधिक आपन का कॉस्ट वगैरह आपन कॉस्ट अधिक आपन पड़िबो. सेहि पे कि जदि हम इठी इंडियंस मानको आपन टिके पाठ पढे दिके सेमानको ही क्लर्क काम हम देई देबा त हमर बहुत ह्यूज कॉस्ट तांको पाखो पावर आपन दिया जनथला सेमाने केवल आपन क्लर्क बळिया खटा जाउथला. फाइन. So that was actually the prime motive that you can mention. जदि आपण देखिबे ना एनालिसिस हमें करबा असेसमेंट माने कोन आपण एनालिसिस हमें करूछंती ए जो आपण एजुकेशन जो इंपार्ट आपण करूथले तांक या पछरे तांकर मेन कारण आपण कोन थला. सो दैट इज द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड योर ब्रिटिशर्स दैट यू कैन स्पेसिफाई. No doubt it spread your western education among the Indians, but the rate of your literacy was abysmally low during your British rule. So the state of your women education was pathetic. This was because the government did not want to displease the orthodox nature of your Indians, and also because your women could not generally. Hello. Is everything fine right now? Can you see? Can you hear me? Am I audible right now? Okay, I hope it's fine right now, right? Okay, I hope it's fine right now. So आम डिस्कसन अपन करूँ. So in 1911 the illiteracy rate in British India was 94%. In 1921 it was your 92%. So the scientific and technical education was ignored by the British government that you can mention because सेमानकर मेल मूल उद्देश्य अपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपन नथिला. सेमानकर मूल उद्देश्य अपन इनोवेशंस अपन नथिला. सेमानकर मूल उद्देश्य केवल रहितला टू क्रिएट योर क्लरिकल एंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स. Okay, so that we can assist in their administration. So that was the primary motive. So that was the primary motive of your Britishers that actually we can say, right? So that is the primary motive that we can say. So right now ये होच अपन कोन ना this is your assessment जदि हम देखिबा अपन ब्रिटिश एफर्ट्स कर एजुकेशन माने जदि हम टिके लॉन्ग क्वेश्चंस अपन देखिबा तो ये होच अपन भाई मेन इंपोर्टेंट मुद्दा ताको हमें असेस अपन करि परबा क्रिटिकली एनालिसिस जदि क्वेश्चन पछरे त अपन लिखि परबे. तो आज का डेट रे जो इंडियन एजुकेशन हमर रही जो इंडियन एजुकेशन दैट एक्चुअली राइट नाउ वी हैव. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बा सॉल्यूशंस जदि हम अपन देखिबा हमर जो प्रॉब्लम्स अपन जहा जो प्रॉब्लम्स अपन रही तो मेन जदि यार सॉल्यूशंस अपन देखिबा कोन ना मोर एंड मोर नंबर ऑफ इनोवेशंस. राइट. सो पढ़ा रे अपन इनोवेशंस अपन दरकार. टीचर्स माने अपन एक्चुअली अपग्रेड अपन हवा दरकार.
सेमानकर स्किल्स राइट सेमानकर स्किल्स अपन अपग्रेड अपन हवा दरकार सो माने मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग सेमान अपन सेमानकर ट्रेनिंग अपन करा जिबा दरकार देन होचे थर्ड होचे अपन एजुकेशन अपन अफोर्डेबल अपन हवा दरकार जोथि पे अनएकेडमी गोटे अपन प्रयास अपन नीचे राइट तो एजुकेशन शुड बी योर अवेलेबल एक्सेसिबल এবং আপনার अफोर्डेबल अपन हवा दरकार राइट सो बर्तमान राइट नाउ ओएस रा कोचिंग कंप्लीट अपन 300 मंथ राइट सो रुपीस 300 टंका रे आपण माने ओपीएससी रा भाई मासुक अपन 300 टंका रे सब्सक्रिप्शन नै कि प्रिपरेशन करि परछन कि नै तो माने एजुकेशन अपन भाई समस्त के पाखु अपन पहुंची परिछि एजुकेशन हैज इज राइट नाउ अफोर्डेबल जो मैंने अपन अफोर्ड करू नांती से माने डेलिबरेटली से अफोर्ड अपन करू नांती बट सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड सो अपन सॉल्यूशन कोन ना एजुकेशन क्वालिटी अपन इंप्रूव अपन हवा दरकार एजुकेशन अपन अफोर्डेबल अपन हवा दरकार सो एजुकेशन अपन क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन टीचर जो अपन स्किल्स से अपग्रेड अपन हवा दरकार इनोवेशन अपन आसीबा दरकार सो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट एक्चुअली यू कैन से फाइन तो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अपन भलो रहबा दरकार राइट सो ग्रॉस एनरोलमेंट अपन बढ़िबार दरकार स्टूडेंट टीचर नंबर्स मध्ये अपन बढ़िबा दरकार नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस अपन बढ़िबा दरकार कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपन हवा दरकार राइट ना सो देन होचे अपन अब्रोड को जीवा पई अब्रोड रो पढिया पई स्टूडेंट्स मानको को स्कॉलरशिप वगैरह भाई अपन मेंशन आमे से मानको अपन फोकस अपन करिया दरकार राइट स्टूडेंट्स माने जेमती मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो एंड दे कैन हैव देयर रिसर्च वर्क इन योर अब्रोड दैट वी कैन स्पेसिफाई फाइन सेगुडी को हम अपन कहि परिबा राइट सो दिस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन सिस्टम मु भाबुची अपन गोटे डिटेल क्लैरिटी गोटे अपन आसीथिबो तो क्वेश्चंस अपन भाई डायरेक्टली अपन पचारू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अपन पचारू बा क्वेश्चंस अपन जति पचारिबो द कंट्रीब्यूशंस ऑफ योर ब्रिटिशर्स इन योर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बा क्वेश्चन जति अपन पचारिबो क्रिटिकली एनालाइज द एजुकेशन सिस्टम दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय योर ब्रिटिशर्स सो आपण मानकर आंसर आपण लिखि परिबे सो ये होच अपन हिस्ट्री गोटे इंपोर्टेंट आंसर राइटिंग सो जीएस आंसर राइटिंग भाबुच अपन क्लियर कट अपन हेतिबो तो जेतले अपन लिखिबे अपन एंशिएंट हिस्ट्री अपन स्टार्ट अपन करिवे जेमति कि हिंदू मुस्लिम को कथा हम देखिले सो हिंदू कर अपन पाठशाला कथा मेंशन अपन कर देबे गुरुकुल कथा मेंशन कर देबे मुस्लिम्स कर मक्तब कथा मद्रासास कथा मेंशन अपन कर देबे तापर सीधा अपन मॉडर्न हिस्ट्री के अपन पढाई आसीबे मॉडर्न हिस्ट्री में अपन देखिले तीनटा पहलू अपन देखिले राइट सो ब्रिटिश गवर्नमेंट माने कोन रिफॉर्मेशन अपन आनिले क्रिश्चियन मिशनरी रो मेन कंट्रीब्यूशंस अपन कोन रहितला प्लस अपन एनलाइटन इंडियंस जो सब अपन एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान अपन जो पुट फॉरवर्ड कले सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री ताको अपन मेंशन करि परिबे ऑलरेडी हम एजुकेशन पॉलिसी कथा हम अपन डिस्कशन करि साचे सो द एनलाइटन इंडियन और द एजुकेटेड इंडियंस सो दे विल आल्सो पुट सम रिफॉर्मेशंस इन योर एजुकेशन सिस्टम दे सब माने बारंबार कोन हुए त से माने तंकर एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर अपन करंती दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फाइन तो अपन आंसर्स को एई भले अपन कंक्लूड अपन करिवे फाइन सो दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड वी हैव टू ओवरकम इट बाय अप्लाइंग सच एंड सच टेक्निक्स ताको अपन भाई मेंशन अपन करिकि आपनकर आंसर को कंक्लूड अपन करि परिबे ठीक अछि सो भाबुच अपन क्लास अपन हेल्पफुल हेतिबो एमती अनएकेडमी रे बहुत सारा क्लास रहिछि तो होम साइंस क्लास ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास जीएस आंसर राइटिंग क्लास एनसीईआरटी क्लास फाइन सो जीएस मेंस रा बहुत बड़े सब तक माने इंडिविजुअल मॉड्यूल करिकि बहुत बड़े क्लास अपन सारिछि तो देन होछ अपन आंसर राइटिंग पे क्लास अपन चलिछि जीएस पेपर अंदर वर्तमान डिवीजन भी अपन होछि तो बहुत बड़े क्लास अपन रहिछि दोज हु वांट टू जॉइन अनएकेडमी से माने अपन अनएकेडमी जॉइन करि परिबे यू कैन अप्लाई माय रेफरल कोड दैट इज पुरुषोत्तम लाइव ओके सो यू कैन अप्लाई माय रेफरल कोड दैट इज पुरुषोत्तम लाइव PURUSOTTM LIV पुरुषोत्तम लाइव दिस इज माय रेफरल कोड यू कैन कम यू कैन जॉइन अनएकेडमी आपन जदि किछि भी क्वेरीज थाय यू कैन मैसेज मी माय नंबर इज 9853316916 राइट सो यू कैन मैसेज मी जदि किछि भी आपन गाइडेंस वगैरह आपन दरकार थे डेफिनेटली आई विल हेल्प यू अ लॉट ओके एंड अपन फीस होछ अपन मात्र 300 टंका जदि अपन 2 ईयर सब्सक्रिप्शन होचंती तले मंथली अपन फीस अपन आसीबो 300 रुपीस 1 ईयर पे फीस होछ अपन 500 रुपीस फाइन सो 1 ईयर की 2 ईयर सब्सक्रिप्शन नियंतु ये सब एजुकेटर का क्लास अपन करि परिबे सब बैच अपन एक्सेस अपन करि परिबे एएसओ ओएस ओएमसी सब अपन पाठ पढि परिबे एंड कंप्लीट प्रिपरेशन ओएस पे प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल पे अपन करि परिबे जस्ट एट द रेट ऑफ योर 300 रुपीस ओनली विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू गुड बाय हैव अ गुड डे बाय बाय